Good morning, children. Today we are going to learn some new sight words. Do you know what sight words are? Sight words are the words which we see and read. Sight words वो होती है जो हम देख के पढ़ते हैं. Let's learn 5 new sight words today and we will see a story where we are using these 5 words. आज हम 5 new sight words पढ़ेंगे और उसके बाद एक story देखेंगे जहाँ पे हमने ये sight words यूज किया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मैं पढ़ूंगी और आप सुन के सीखेंगे. ठीक है बच्चों. फर्स्ट आई विल रीड एंड यू विल लिसन एंड लर्न. फर्स्ट वर्ड इज देयर. देयर is some up all. Let's read it again. There is some up all. There is some up all. Now we will all read it together. I will also read and you will also read. ठीक है बच्चों. There is some up all. There is some up all. Now I will show you the words and you will read. Great job. I hope you have read all the words. Now we will all read it together again. There is some up all. One last time. There is some up all. Good job. Now that we have learnt all the sight words, let's see a story. Here we are using these sight words, so you will listen carefully. The name of the story is The Bug. The Bug. Let's see what is happening in the story. There is a little bug in the rug. Come down to look at the little bug. Some bugs are little and some are big. I do not like it at all. Not all kids like bugs. Go get the jar to put the little bug in. There are some jars. Put the bug in there. He will get out of that jar. I said, put the bug out on a tree. There is a tree in the yard. I will go out and put the bug up in a tree. Amazing. I hope you like the story. Let's read this story one more time. Okay, children. This time you will see the words which are in red color carefully because these are the words which we are learning today. इस बार जब मैं फिर से पढ़ रही हूँ आप ये रेड कलर के वर्ड्स ध्यान से सुनिए बच्चों. ये वर्ड्स आज हम सीख रहे हैं, है ना? लेट्स रीड इट अगेन. द बग. There is a little bug in the rug. Come down to look at the little bug. Some bugs are little and some are big. I do not like it at all. Not all kids like bugs.
Go get the jar to put the little bug in. There are some jars. Put the bug in there. He will get out of that jar. I said, put the bug out on a tree. There is a tree in the yard. I will go out and put the bug up in a tree. Great job. We finished the story again. Now it's your time to read and write. First, you will open the video again and read all the sight words loudly like I did. After you read it loudly, open your book and write each sight word five times. When you are writing, say it loudly and then write. In this way, you will learn the sight words very fast. Now, I will also send you the pictures of the story. You will try to read the story and read the sight words correctly. Even if you don't know the other words, you just try, but the sight words should be correct. ठीक है बच्चों, आपके 3 वर्क्स मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. फर्स्ट वर्क है रीड द साइट वर्ड्स. आप ये वीडियो ओपन करेंगे और साइट वर्ड्स को लाउडली पढ़ेंगे और सीखेंगे. आपका सेकंड वर्क है राइट द साइट वर्ड्स 5 टाइम्स. अपना बुक ओपन करके सारे 5 साइट वर्ड्स को 5 टाइम्स लिखेंगे. जब आप लिख रहे हैं उसको आप लाउडली बोलते बोलते लिखिए. ऐसे आपको ये साइट वर्ड्स जल्दी आ जाएंगे. आपका थर्ड वर्क है रीड द स्टोरी एंड रिकॉर्ड. आपको मैं स्टोरी के पिक्चर्स भेजूंगी. वो पिक्चर्स ओपन करके आप स्टोरी को पढ़ने की कोशिश करिए. जब आप पढ़ रहे हैं आप साइट वर्ड्स को करेक्टली पढ़िए. आपके साइट वर्ड्स अलग कलर में है ना बच्चों, तो उन वर्ड्स को आप करेक्टली पढ़िए. जब आप ये साइट वर्ड्स पढ़ रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए. और आपने जो बुक में ये साइट वर्ड्स 5 टाइम्स लिखी थी उसकी भी फोटो भेजिए. प्रैक्टिस प्रॉपरली एंड हैव फन.